Hello friends, this is my new video. We can learn about tenses. Now this video about past perfect continuous tense. We can learn also like how we can use it and we can use in our daily conversation. I'll give you examples. इसकी पहचान हम पहचान से पता लगाते हैं कि कौन सा टेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान होती है और इसका जो रूल होता है वो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट होता है और उसमें टाइम दिया जाता है लाइक सिंस मॉर्निंग और फॉर टू डेज टाइप सिंस एंड फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं। गीता सुबह से नृत्य कर रही थी। गीता हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह से खाना बना रही थी। आई हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। देर इज़ लॉट ऑफ एग्जाम्पल we can use in our daily conversation. I had been playing video games since morning. Second example. I had been waiting for bus when it arrived. They had been playing cricket. This is very easy examples. It also easy, we can learn easily. Next time, we had been living here for 5 years. हम यहाँ 5 सालों से रह रहे थे। I had been talking about different topics for 2 years. She had been watching TV when I arrived. I had been calling since morning, but she didn't receive. मैं उसको सुबह से कॉल कर रही थी पर उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। माई
mother had been cooking for food for me since morning. Means मेरी मम्मी सुबह से खाना बना रही थी मेरे लिए. Class teacher had been giving lecture since morning. Oh my god. If she continue giving lecture, how is she? Thanks for watching my video, guys. Please like my video and subscribe also my channel. If you like it, then please click the bell icon. Thank you, guys. Please subscribe my channel and share also. You can.